So, dear friends, how are you? Hope you all are fine and preparing for your examinations. तो डियर फ्रेंड, अभी 12th मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम शुरू होने में एक वीक है और उसमें हम लोग फास्ट रिवीजन करना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी विल टेक। और स्टूडेंट्स आप देखें कि आज से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं एंड वी विल टेक in a fast manner we will get the revision work in mathematics class 12. So dear friends, जरा देखें कि इसमें अब लंबा समय ना होने के कारण से केवल रिवीजन वर्क हो पाएगा और वो भी फास्ट फास्ट आपको बताया जाएगा, तो आप लोग देखें और उससे बेनिफिट ले सकते हैं। सो विद इन फ्यू मिनट आई विल स्टार्ट दिस टॉपिक। तो आप लोग लगातार इन दिनों बने रह सकते हैं और 1 week up to the examination will be over for CBSE, and that will be on this 9th March. You are having the examination, so that's why we will take it. If you are new, then you subscribe the channel also. सो डियर फ्रेंड्स, जरा आप लोगों ने देख लिया है बोर्ड पर पहला टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज मैट्रिसेस। मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स कम होती है बट इट इज सिक्योरिंग, और आप अच्छे से इसमें कुछ कुछ जहां पर फॉल्ट्स होते हैं, स्टूडेंट्स आर जनरली टेकिंग द मिस्टेक्स, उसको रेक्टिफाई किया जाए सो दैट वी विल गेट इट। सो इन ए फास्ट मैनर आई विल रिवाइज इट। तो जरा देखें, मैट्रिक्स में सबसे पहले डेफिनेशन आती है मैट्रिक्स की, आप जानते हैं। सो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। अगर हम ये कहें रेक्टेंगुलर एरे, अगर हम 1 2 5 6 बोलते हैं, इट इज ए मैट्रिक्स। इट इज इन दिस फॉर्म, आप लोग इसको देख सकते हैं। और रेक्टेंगुलर एरे का मतलब है अरेंजमेंट होना चाहिए, दैट मस्ट बी इन द रेक्टेंगल। ओके, ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर? सी हियर डियर फ्रेंड्स, फर्स्टली आप इसको रिवाइज कर लें। दिस इज रो फर्स्ट एंड दिस इज रो सेकंड। वी विल राइट दिस R1 एंड R2, दोनों रो को बोलेंगे, एंड इट इज कॉलम नंबर 1 एंड इट इज कॉलम नंबर 2। सो देयर आर रोज हॉरिजॉन्टल होती हैं और इस तरह से कॉलम होते हैं। We will get it, and you just count the number of rows first, then you count the number of columns secondly. Then how to get it? 2 rows are there, 1 and 2, and 2 columns are there, so that's why its order will be 2 by 2. देख लें, पहले नंबर पे आपको क्या लिखना है, that is order of this, that must be the number of rows and that must be the number of columns here. Okay,
अब बात आती है कि कुछ टाइप्स के मैट्रिक्स के टाइप्स क्या हैं. Number one is column matrix. A matrix having only one column. See here, 1, 2, and 3. You will take this one. This will be the column matrix having only one column. Rows कितने भी हों लेकिन column एक होना चाहिए. Similarly, in case of row matrix, you know that how to get this. Only one row should be there. 1, 2, 3. I'm taking this. Column कितने भी हो, but the row must be counted as one. अब बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर मैट्रिक्स. सी हियर, स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हैं ये तो एक रेक्टेंगल हो गया. एनी मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल, that type of matrix is called square matrix. I will take this -1, 0, 0 and 1. I will take this. How many rows? 1 and 2. How many columns? 2 and 2. If the number of rows equal to the number of columns, then it is called a square matrix. आगे बढ़िए. Diagonal matrix की क्या पहचान है? It must be a square matrix only on the diagonal. डायगोनल में भी ये मेन डायगोनल बनेगी, उस पर कुछ अंक या कुछ आपके पास फंक्शंस हो जाएं, एंड अदर एलिमेंट शुड बी जीरो. दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. सी हियर, 1, 0, 0, 0, 3, 2, here again 0, 1, 0, 0 and 1. I will take. So what you are observing that on the main diagonal the elements are non-zero and other elements are zero. That's why it is called the diagonal matrix. आगे बढ़ते हैं. स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, but in this case all the elements on the main diagonal should be equal. See here, so 3, 3 and 3. This is 0, this is 0, this is 0. Similarly 0, 0 and 0. You will take on the main diagonal all the elements should be equal as a scalar. That's why it is called the scalar. Other elements are 0. मतलब ये हमारा डायगोनल का ही केस है, लेकिन ऑल द एलिमेंट शुड बी इक्वल. अब बात आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की. आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस व्हाट? सो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. What I am getting this on the main diagonal 1, 1, 1. आप देख रहे हैं कि elements should be on the main diagonal, that must be equal to 1. यूनिटी होना चाहिए और बाकी एलिमेंट 0. मतलब it is the case of a scalar matrix having all the elements on the diagonal equal to 1. आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं जीरो मैट्रिक्स मींस व्हाट? एनी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर if all the elements are zero, then that is called zero matrix. Suppose 0, 0, 0, 0, 0, 0. It is one matrix having this all the elements are zeros. तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 1, 2, 3 and 2 columns are there. That's why it is a zero matrix of order 3 by 2. So dear friend, in the fast manner रिवाइज करके जो जो मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे. यू विल गेट दिस वन एंड फाइनली सो डियर फ्रेंड्स, जरा एक क्वेश्चन अपन लेके चलेंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. सी हियर, construct a 3 by 2 matrix if aij that is equal to I plus j. See here, so first of all we will take what about the order of this matrix? That must be equal to 3 multiplied 2. So 3 rows, 1, 2, 3,
and two column must be there. See here, this will be A11. You know that this is A11, first row and first column, A11. And you want to get these three rows. Okay, now A12, this is first row, second column. Similarly, I will take this A21, A22. A31 and A32. So see here, how many rows? 1, 2, and 3. How many columns? Two columns are there. So that's why you are taking this one. So get it. Now the definition for get I plus j. So see here, I will take this Aij must be equal to I plus j, sum of the digits of number of rows and number of columns. So see here, 1 and 1, that is 1 plus 1, that is 2, 2 plus 1 is 3, this is again 3, this is 4, this is 4, this is 5. You are taking this one. So this is final answer in this case. You have to construct a 3 by 2 matrix if definition is given as the element should be as in the form of I plus G. So this, okay. Now see, on the basis of equality of matrices, आप लोग पढ़ चुके हैं. आप देखें, equality means what? Two matrices are called equal matrix if number of rows in both the matrix and number of columns must be equal and individual elements should also be equal. So here you are saying that it is 2 by 2, 2 by 2. That's why these may be equal matrix because you are taking this equal. That's why individual elements should also be equal. On the basis of this, you can get the answer in this case. See here. So, through the equality of matrix, this 4 and y should be equal. So, finally, you will take this y equal to 4. So, 3 and z, these elements should be equal. On the basis of this, z is equal to 3. So, this x and this 1, you are taking x is equal to 1. And 5 are equal. So, these are the values of x, y, z. X is equal to 1, y is equal to 4, and z is equal to 3. So, this is on the concept क्या चला हमारा equality of matrices. तो equality of matrices पर आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं. So I will take one more question. See here. देखें किस टाइप के जो है I have touched only this short answer type questions. Okay. तो अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अपन. And I will take this addition operations on matrix. Operations on matrix. Fast revision करिए. I will take this 1, 2, 3, 4 plus 1, 5, 7, 2. So two matrices can be added as per your definition if both are having the same order. Number one, and then on the basis of this operation, how to get the addition operation? Individual elements must be added. 1 and 1 should be added. 1 plus 1. 2 and 5 must be added. 2 plus 5 here. 3 plus 7 here. And 4 plus 2 here. So dear friends, this will be the answer in this case. Operations on the matrix addition की बात अपन कर रहे हैं. So what is final result in this case? 1 plus 1 is 2, this is 7, this is 10, this is 6. I will take this one. Okay. This is called the addition of matrices. That is very good operation. On the basis of this, you will take this. आगे बढ़ते हैं थोड़ा. Similarly, in case of subtraction, if here you are taking minus sign, so only the difference will be this element minus this minus this, like that you will operate this one. So this is called addition and subtraction of matrices. So dear friends, अब जरा थोड़ा सा अपन बात आगे करेंगे कि if you are given this
multiplication multiplication by a scalar, मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना बाय ए स्केलर, I will take 1 2 3 4। if you want to get it with the scalar 3 से इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, so how does you will get this one? 3 multiplied 1, that is 3, all the elements should be multiplied with the scalar। 3 2s are 6 here, 3 3s are 9 here, and 3 4s are 12 here। You will take this one, this will be the answer in this case। So you have touched that how to get the scalar multiplication of the matrix। See, negative of a matrix, इसको revise करिए। So how to get this? If A is a matrix, then how to get this minus A? How to get minus A? See, if 1 2 1 2 3 4, this is the matrix A, and minus of A will be, all the elements should be multiplied with the negative sign। So this will be -1 -2 -3 -2। We will take this। ये हुआ हमारा किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव बनाने का कॉन्सेप्ट। ओके, सी हियर, I will take one question that is also very short answer type। इसको अपन लेके चलते हैं, जरा देखिए dear friends। If a matrix A is equal to 1 2 3, then 2 3 1, and the matrix B is equal to 3 minus 1 and 3 minus 1 0 2, then find the value of 2a minus b। You want to get this 2a minus b की वैल्यू आपको निकालना है। सी, here 2a minus b, first of all you want to get this 2a and we will get this minus of b here। 2a minus b करेंगे। So first of all you just take here 2 multiplied a। I will put here 1 2 3 2 3 1, and minus b। What is b here? 3 minus 1 3 minus 1 0 2। You are taking this one। I have taken 2a minus b। Now, as per the definition of scalar multiplication, 2 multiplied 1, that is 2 4 6। 2 multiplied 2 is 4 6 and 2, minus 3 minus 1 3, then this is minus 1 0 2। So as per the definition of difference of two matrices, you can write the answer is 2 minus 3, 2 minus 3, then 4 and minus already given here, so get the value of this, that is equal to 4, and this is 4 and minus minus plus 1। I will take this, this is 6 minus 3। I will take this, okay, 4 minus a minus already plus 4 plus 1, 6 and minus 0, this is 2 minus 2। We will take this 2 minus 2, okay। So what is it? This is 2 minus 3 is minus 1, 4 plus 1 is 5, 6 minus 3 is 3, 4 plus 1 is 5, 6 minus 0 is 6, and 2 minus 2 is 0। So dear friends, you can get the answer for this question is this। So we will take one more question on the basis of this matrix। So finally,
So dear friend, I will take one more question. See here, revise करिए. So today is our target to revise this simple chapter, that is matrices. See here, you are given this. Find question here. Find capital X and Y if x plus y is equal to 5209 and capital X minus y is equal to 360 minus 1. 36 and 0 minus 1, you are given this. देखें जरा, इससे पहले वाला क्वेश्चन अलग टाइप का था. अब जरा आप देखेंगे, यहाँ पर आपको सम ऑफ टू मैट्रिक्स x प्लस वाई आपको ये दिया है, x माइनस वाई आपको ये दिया है. देन यू वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल x एंड y. अब इन दोनों को आपको निकालना. सो सी हाउ टू गेट दिस वन. देखें, अगर मैं इसमें ये ऐड करता हूं तो y एंड माइनस y विल बी कैंसल्ड एंड x एंड x विल बी एडेड. तो क्या करें, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं. फर्स्ट प्लस सेकंड यू जस्ट ऐड. सो दिस इज x प्लस y प्लस x माइनस y इज इक्वल टू दिस फैक्टर प्लस दिस फैक्टर. ओके, 5209. This is 360 minus 1 you are taking. So y and minus y will be cancelled. X and x, that is 2 capital X, is equal to, get the addition of two matrices. 5 plus 3, that is 8. 2 plus 6, that is 8. 0 and 0, that is this. 9 minus 1, that is again 8. You are taking this. So get the value of x here. X, how to get this? ये 2 will be in the division of this. 8, 8, 0, 8. Now 1 by 2 से scalar multiple कर दीजिए. So you will divide this each term by 2. So what I am getting, this is 4404. This will be the value of this. Similarly, y can be taken from this when you will subtract this term from this term. X plus y and minus x plus y. You just see. Minus इसको करेंगे तो ये minus हो जाएगा, ये plus हो जाएगा. So x and x will be cancelled. Y and y, that is 2 capital Y हो जाएगा. This minus this करिए, यहाँ से result मिलेगा. And from that you will calculate the value of y. Multiplication of two matrices. दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे लिया जाता है? First of all, you just see if m into n is the order of first matrix, then that second must be n into p. फर्स्ट मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर m और n है, सेकंड का n और p है, then you will define it as n and n. The column of this must be equal to the rows of this. ये दोनों equal हैं, then only you can multiply two matrices. Now I will take this, how to get the multiplication of a matrix. Suppose 1, 2, 3, 4, 5 and 6. I will take this and with the help of this 3, 0, 0, 1, 1 and 2.
सबसे पहले देखिए इन दो मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड 3 हो गया, इट्स ऑर्डर विल बी 3 मल्टीप्लाइड 2 हो गया। So this 3 and this 3 are equal, that's why you can multiply it. So multiplication is defined for these matrix. अब जरा इसको मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट टेक दिस कॉलम, यहाँ पर रखिए इसको 301 को, ठीक है, 3 1 जा 3, ठीक है, 0 और 0 दिस इज 0, 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 हो गया। सो 3 एंड 4 दैट इज 12 हो गया, प्लस 0 एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया, 1 और 6 का मल्टीप्लिकेशन व्हाट इज दैट 6 हो गया। ओके, सो फर्स्ट कॉलम आपने लिया यहाँ से 301, इसको यहाँ रखा एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, देन यू हैव कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट एंड सेकंड element of first column. Now you just take, see here, I will take second column, this is 0 1 2, this is 0 1 and 2, I will take this 0 multiplied 1, that is 0, 1 multiplied 2 is 2, 2 multiplied 3 is 6, then 0 multiplied 4 is 0, then 1 multiplied 5 is 5, then 2 multiplied 6 is 12. So this is the process to get the multiplication of two matrices. So finally you will get this 3 plus 3 is 6, 12 plus 6 is 18, then 6 plus 2 is 8, 5 plus 12 is 17. So dear friend, this will be the answer in this case. This is the process to get the multiplication of two matrices. आगे बढ़ते हैं थोड़ा multiplication of two matrices के बाद. So let us try one very good question in this case. So see here. Sometimes you are given such a type of questions. If you are given this A and B, two matrix आपको मिल जाएगा और आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि get the value of AB, the multiplication of first by second, और फिर पूछा जाएगा तो get the value of BA, BA और AB में क्या डिफरेंस है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो जाए, ये जनरल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इट इज जस्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ए बी का मतलब हो गया पहले ए को रखेंगे फिर बी को रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ए और बी को रखा। बी ए को निकालने के लिए पहले बी को यहाँ रखिए और फिर ए को रखिए, देन यू गेट द प्रोसेस। अगर इस तरह से है, समटाइम्स दीज मैट्रिसेस मे और मे नॉट बी इक्वल, तो आपको लास्ट में आंसर दे देना है। अगर ये दोनों इक्वल है देन गेट द वैल्यू ऑफ दिस ए बी इज इक्वल टू पी ए, otherwise these two matrices are not equal। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। So dear friend, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रिवीजन टेक्निक चल रही है हमारी फॉर द 12th मैथमेटिक्स, जो कि अभी कमिंग वीक में एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है। So how to get this one? So dear friends, I will take one very good question. See here, देखें, यू आर गिवन दिस। अब थोड़ा सा हम लोग लेंथी क्वेश्चंस पर चलेंगे, बट दीज आर वेरी इजी, आप थोड़ा सा इसको देख लें। सी हियर, आई विल टेक दिस क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, then 3 minus 2 1, 4 2 and 1, you are given this, then verify, then show that, show करना है, show that this is a cube minus 23a, okay, and minus of 40i is equal to o. O is null matrix और zero matrix। See यार, ये अच्छा क्वेश्चन इस तरह का बनता है मैट्रिक्स में। हाउ टू गेट दिस a cube?
a से आपको ये मिलेगा 23 a का मतलब हो गया इस मैट्रिक्स को आपको -23 से मल्टीप्लाई करना है. इट इज just the scalar multiplication of this matrix. And minus of 40 I for identity matrix आप already जानते हैं. So this is the identity matrix here where the diagonal elements are equal to 1. And here what is 0? O है. O is null matrix और zero matrix आपको इसमें मिलेगा. तो आपको क्या करना है, ये तीनों को कैलकुलेट करके इसको जीरो मैट्रिक्स के बराबर शो करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड्स, आप क्या करिए, ए स्क्वायर को कैलकुलेट करिए. दैट इज ए मल्टीप्लाइड ए 1 2 3 3 minus 2 1 4 2 1. इसको मल्टीप्लाई करिए 1 अगेन 1 2 3 3 minus 2 1 4 2 and 1. This is 1. You are taking this. So get the value of a square. What is that? This 1 3 4 here. I will put 1 3 4 here. First column को यहाँ रखेंगे. So 1 multiplied 1, that 3 2s are 6, 4 3s are 12. Again this is 1 multiplied 3, that is 3, 3 2s are minus of 6, and 4 1s are 4. Then 1 4, that is 4, 3 2s are 6, and 4 1s are 4. You are taking this. ये फर्स्ट कॉलम था, यहाँ रखा तो फर्स्ट कॉलम तैयार हो गया. नाउ यू जस्ट टेक सेकंड कॉलम. व्हाट इज सेकंड कॉलम? 2 -2 and 2. This is second column. We are putting here and get the corresponding multiplication. 2 1 is 2, minus of 2 multiply -4, 2 3 is 6, and 2 3 is 6. 2 minus 2 and minus 2, that is plus of 4, and 2 multiplied 1 is plus of 2. Similarly 2 multiplied 4, what is that? 8 minus 2, that is minus 4. This is 2 multiplied 1 is 2. I have taken here, that is for this. Okay, see here. And the last column I will take here. अब जरा इसको लेंगे, ये थर्ड कॉलम, दैट इज 3 1 and 1. I will take this. So get the third column. 3 1 is 3, 1 and 2, that is 2, 3 1 is 3. Okay, so 3 3s are 9, 1 and minus 2, that is minus of 2, 1 and 1, that is plus of 1. I will take here 3 4 is 12, 1 multiplied 2, that is 2, and 1 multiplied 1, that is 1. Okay, so finally इसको क्रॉस चेक कर लीजिए. So finally you will take this 12 और 7 19 here, and 3 and 4 7 minus 6 is 1, and 4 6 and 4 10 and 4, that is 14, and 2 and 6 8 minus 4 is 4, 6 and 4 10 and 12 हो गया, and this is 8 and 2 10 minus 4, that is 6 हो गया. Okay, that is 6. Then finally 3 and 3 6 and 2 8 हो गया, and finally 9 plus 1 minus 2, that is minus 8 हो गया plus 8. This is plus 14 plus 1, that is 15 हो गया. So this is the value of a square. Similarly, dear friends, I will not waste your time. इसको अब आप again a से और multiply कर लिए. a cube का मतलब हो गया, that is a square. A square multiplied a. This is the value of a square, and you just get the value of this. एक बार और इसको आप multiply कर लीजिए. 3 minus 2 1, 4 2 4 2 and 1. इसको multiply करिए, एक रिजल्ट आपके पास ये वाला आ जाएगा. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ a क्यूब. सिमिलरली फॉर दिस माइनस ऑफ 23a, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस पूरे को -23 से मल्टीप्लाई करना. एंड 40i, आई विल टेक दिस वन. ये आपको मैं बता देता हूँ, दिस इज 1. सेम ऑर्डर का लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1, एंड वी विल टेक दिस माइनस ऑफ 40. इसको -40 से मल्टीप्लाई करेंगे. यू विल टेक दिस -40 0 0
0 minus 40, 0, 0, 0 minus 40. So this will be third one. अब आपका काम है जो तीनों रिजल्ट हैं उनको आप ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा लास्ट में नल मैट्रिक्स के बराबर ये रिजल्ट मिल जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा कुछ रिवीजन वर्क 12th मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन से पहले। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट डे में ऑनलाइन सेशन। ओके, सो इफ यू आर न्यू then subscribe the channel. We will meet in the next revision system. Okay, thank you very much.